Good morning, everyone. My name is Sneha, and I'm from the marketing team of LEAD, which is India's largest school edtech company. On behalf of LEAD, I would like to welcome you all to this live webinar, which is on how to implement NEP in school classrooms. Today, we have with us Professor Manish Jain from Center of Creative Learning, IIT Gandhinagar. He is a former Synopsys scientist with decades of experience and expertise to spark innovation and creativity via puzzles, toys, visuals, graphs, and other unique visual aids. I'm sure you will gain a lot of insights from him today, given his knowledge and experience in the field. So without further ado, I would request him to kindly initiate the session. After you, Professor. Professor, your audio is all right. Yeah, this should be better. Thank you so Yes. much for calling. I really wanted to thank. Just one second. Sorry about that. Thank you so much, Shalini. Abhijit has been working, frantically from our side, and in fact, he used to say. There are 184 participants. Thank you so much for joining. The only problem is I cannot see any of the faces because that's the lead's, quote unquote policy. कि हम किसी का चेहरा नहीं दिखाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. I don't know why we do that. It's almost like speaking to icons other than one marketing communications that I can see on my icon. And every day, thank you so much for calling. I don't know, and we've been working hard. Abhijit has been working hard, and I hope it is worth your time on a Saturday. आज आपकी छुट्टी है, पर शायद आप लोगों को ऑफिस से डंडा आया कि आपको ज्वाइन करना है. वो IIT का some professor will give you ज्ञान. I don't know what was the message that was sent, but in any case, I hope it is worth your time. I don't know ज्ञान कितना मिलेगा. I'm just going to share some of our thoughts, and our experiences that we've had here in this small lab that we call Center for Creative Learning in IIT Gandhinagar. मुझे ये भी बोला गया कि आप हिंदी में ही बात करिए. मुझे ये भी बोला गया कि आप इंग्लिश में ही बात करिए, and आपका topic, your topic is whatever, and that reminds me of a very interesting story. I don't know how many of you have heard of this place, IIT Kanpur. That is where I went to school. Spent 4 years 30 years ago, and their founding director was Dr. Kelkar. He was founding director for 2 years, and somebody was telling a very interesting story. In his memory, Kanpur instituted a lecture, Kelkar lecture series. Every year they would call eminent people to come and give a talk. And in that context, they asked India's eminent jurist Nani Palkiwala to come and give a talk. So somebody from IIT Kanpur called them and said, "Sir, please, can you we would really like you to come and give a talk, and would you be willing to do that?" He said, "Yeah, of course, I'll give a talk at Kanpur." So of course he came to Kanpur, but उसको जो भी जिसने भी कॉल करा था उसने बोला, "सर, ऐसा है, आपको ये टॉक है और आपको ये बोलना है और ये बताना है और ये आपका ना टॉक का टाइटल है." So yes, very good, thank you very much. And this is what in the end Mr. Palkiwala says, यार तुम मुझे बता कुछ भी तो टॉक का टाइटल क्या है, मैं तो वही बोलूंगा जो मुझे आता है. So it doesn't really matter कि आपका टाइटल क्या है, हम तो वही बात कर पाएंगे. And in that sense I'm saying, I don't know what your expectations are. We are going to share some of our experiences, and the interesting thing is now NEP has made it whatever formal in some sense. 6 साल से हम लोग यही करते आ रहे थे. In fact, अगर आप ये स्लाइड एक सेकंड ये बन क्यों होगी, मैं देख रहा हूँ. Hopefully it is on your screen. This is what we are trying to do in our lab. This is the goal of what we try to do in our small lab. This is what our lab is. Center for Creative Learning, IIT Gandhinagar. It's a small lab here, somewhere here. आपको mouse दिख रहा होगा शायद. This is Sabarmati, and on the banks of Sabarmati, this is IIT Gandhinagar, on which we have this small lab. And this is how some days our lab looks like. These are all first year students of IIT Gandhinagar last year. They gathered together. So there is this notion that बच्चे जो है बैठकर काम नहीं कर पाते हैं. These days kids are not in this, students are not in this state that they can spend a lot of time doing. This is what they were doing almost a year ago. All the first year 108, about 250 first year students. ये जमीन पर जो दिख रहा है आपको, ये है it's a 10 feet circle on which there is this logo of IIT Gandhinagar, which is made by straight lines.
and this logo is not straight. So, you know, and on top, you are seeing this, whatever you're seeing on top is actually a 15 feet geodesic. Geodesic is like a large ball, lots of mathematics, 10 pentagons and 110 hexagons. And students have made this using 720 bamboo sticks, 1440 tie belts. और ये पूरा दिन भर बैठकर 10 घंटे लगातार जमीन पर बैठकर बनाया. And so all of this thing about हमें कुछ you know interesting करेंगे तब बच्चे रुचि लेंगे. This is how our lab looks like. This is what we try to do, make education engaging and inspiring, and this is what we're going to talk about largely. So yeah, that's it, end of talk. ये आपको पता चल गया हमें क्या कहना है. NEP buzzwords. No, we are basically saying that all the things that NEP talks about things like इसमें actually इसका transition थोड़ी देर में आता है, so we'll have to fix that. इसका transition takes about 30 seconds. We'll try to fix it. Anyways, the NEP, the kind of things that NEP talks about is something that we've been trying to do in our lab for a long time, right? And this is what it is. To begin with, this is how I will start. I don't know how many of you have heard of this story, but let me do this for you. One second. All right. Isme, I think we will probably try to do some sort of a poll, you know, maybe a poll or whatever it is, right? And if it is possible, Zoom में आप लोग, you know, हाथ उठा सकते हैं, या Zoom में हाथ उठाया जा सकता है. How many of you have heard of this story, The Hungry Crow? ऐसे हाथ उठा सकते हैं. हाथ नहीं, ऐसे तो नहीं उठाएंगे, दिखेगा नहीं, वीडियो बंद है. वो क्या बोलते हैं, वो Zoom में जो भी हाथ उठाने का चक्कर है, Zoom में हाथ उठा सकते हैं. 16 participants have raised their hands. Yes, we have all heard. All right. So, Lipi Sakhuja is saying that all of them have heard. सब उनको सबके बारे में पता है. बहुत अच्छी बात है. सबने सुना हुआ है. The question is, does it really work? ये जो आपको चित्र दिखाया गया था, आपने कभी करके देखा? आपने कहानी सुनी कि हाँ भाई वो कौवा प्यासा था और उसको भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, उन्होंने पत्थर डाले और पानी ऊपर आ गया. आप करके देखिए, it will never work. If the pot is 20, like you see in this picture, if the pot is 25% full, like in here, पानी कभी ऊपर नहीं आएगा, पत्थर भर जाएंगे. You know, the pot will get full with the stones. If it is half full, even then it will not work. The pot has to be 75 to 80% full. Only if you drop some stones will the water come out. Now then the question will be, यार अगर पानी 80% भरा ही हुआ है, तो कौवा बुद्धू थोड़ी है, इतनी मेहनत क्यों करेगा वो पत्थर डालने के लिए, वो वैसे ही अपनी you know चोंच डाल के पी लेगा. So I found this story very interesting. At the same time, what it conveys is a very simple and beautiful message, which is what NEP is trying to do, which is we have to make our learning experiential and hands-on. आपको वो चीजें करके देखनी पड़ेंगी. That is the foremost, one of the 4 pillars that we are going to talk about today. 4 चीजों के बारे में बात करेंगे. NEP की जो मेरे हिसाब से 4 चीजें हैं जिसके ऊपर NEP का प्राइम फोकस है, and we'll have to sort of look at that. One is we'll have to make, you know, we'll have to do things and not just assume. We'll have to sort of ask these questions कि यार ये hungry crow है, चलो करके देखते हैं, मजा भी आएगा, और ये भी ट्राई करके देख लेंगे कि कभी चलता है कि नहीं चलता है. And it turns out that it doesn't work. The second thing NEP talks about is this ability to get this context. I don't know आप में से कितने लोगों ने ये चित्र देखा है, या ये वाला तो खैर देखा होगा, बट ये दिस इज स्टोरी ऑफ नीरज चोपड़ा. या ये वीडियो चला सकते हैं क्या? यहाँ पे चलाएंगे तो अब आ जाएगी. हाँ, अच्छा जूम में, सॉरी PPT में. लेट्स जस्ट प्ले दिस मूवी फॉर यू एंड होपफुली लेट मी नो if आवाज आ रही है तो. टोक्यो जापान, नीरज चोपड़ा ने अपना भाला 36 डिग्री पर फेंककर भारत को एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक दिलाया. 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दुनिया की सबसे बड़ी तोप ने 130 किलोमीटर दूर गोला 55 डिग्री पर फेंका. इन दोनों इवेंट्स को देखकर ऐसे लगता है कि क्लासरूम से बाहर की जिंदगी साइंस और मैथ के कुछ अलग ही नियमों पर काम करती है. करिकुलम के अनुसार तो प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर फेंकें तो सबसे ज्यादा दूर जाती है, लेकिन नीरज ने अपना भाला 45 से कम और बंदूक ने अपना गोला 45 से ज्यादा पर फेंका. बड़ी नाइंसाफी. करिकुलम और रियल लाइफ की इसी दूरी को दूर करने के लिए CBSE और IIT गांधीनगर टीचर्स डे के दिन एकलव्य सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं. और अच्छी बात यह है कि हमारी नई शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 और PISA दोनों ही इन्हीं मुद्दों पर जोर देने की बात.
एकलव्य में हम ढेर सारे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिनसे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े। इंटरेस्टिंग, दिमाग की बत्ती जला दें, ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे आउट ऑफ बॉक्स क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो। और लोकली अवेलेबल मटेरियल से ऐसे इंगेजिंग प्रोजेक्ट्स करेंगे जिससे साइंटिफिक टेम्पर विकसित हो। ऐसा करने से नीरज चोपड़ा के भाले का ज्ञान, तोप के गोले का विज्ञान और प्रोजेक्टाइल के सिद्धांत का समाधान सब अपने आप। So this is where I'll stop, right? And I'll take you back, right? So all of you have heard this story, right? नीरज चोपड़ा ने भाला फेंककर गोल्ड मेडल जिलाया. But did we ever wonder कि यार नीरज चोपड़ा ने, and it was on front page news, नीरज चोपड़ा ने अपना भाला 36 डिग्री पर फेंका था. Whereas if you look at our textbooks, they will say that for us to throw anything the farthest, we'll have to throw at 45 degrees because that's what the science says. So why is it that Neeraj threw at 36 degrees? Right? He must not be an idiot. He must be knowing his science or whatever it is, right? I mean, because he has to throw the javelin the farthest and win the gold. तो उसने ऐसे क्यों करा? The point that I'm trying to make is that there are so many interesting things that are happening in our lives all around us, which bring a beautiful context to education. And unfortunately, that is something we completely miss in our education. Neeraj Chopra ka gold, a beautiful game to do projectiles in our classes, to look at how we throw things and, the path that it takes or parabola that it makes or whatever it, and so on and so forth. If we have time, I'll tell you a wonderful story. But that's what we have to talk about. One, there is this मैं फिर से आपको ले जाता हूं उसी स्लाइड पर जो मैं कहना चाह रहा था, which is basically सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारी चीजें हैंड्स ऑन कुछ कर रहे हैं क्या, हम कुछ चीजें बना के कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. दूसरा, कोई कॉन्टेक्स्ट है कि नहीं. कॉन्टेक्स्ट इसमें नीरज चोपड़ा का कॉन्टेक्स्ट या आर्किमिडीज का कॉन्टेक्स्ट. आई डोंट नो आपने वो देखा है कि नहीं, आर्किमिडीज वाला जरा उठाना. कितने लोगों ने आर्किमिडीज का नाम सुना है? आई एम श्योर सभी ने सुना होगा आर्किमिडीज का नाम. कितने लोगों ने सुना है, जरा हाथ उठा सकते हैं. और क्यों सुना है? ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि भाई आर्किमिडीज वाज द पर्सन हु रैन आउट ऑफ बाथटब क्राइंग नेकेड एंड ही फाउंड समथिंग, व्हाटएवर, यूरेका. नो, दैट्स नॉट ट्रू. I mean that's true. But if I were to ask, if Archimedes were present today and alive, if I were to ask Archimedes कि भाई आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा योगदान क्या था, and he will actually say, बॉल उठा देंगे ना, ये कोई सी भी बॉल दे दो, ये हाथ में दे. आर्किमिडीज का सबसे बड़ा योगदान अगर उससे पूछें तो वो ये था, he was the first person to figure out the volume of a sphere. First person to figure out. In fact, यहाँ पर आप देखेंगे पीपीटी में ये चित्र है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कर देता हूँ अभी के लिए. ये देखिए, दिख रहा है, ये चित्र दिख रहा है. इसके इधर से काफी चीजें हटा सकते हैं, बट ये जो नीचे का चित्र है, ये इसमें आर्किमिडीज ये नीचे बैठे हुए हैं और एक सैनिक है जो उसका गला काटने के लिए तैयार है. It's a true story. Archimedes was trying to figure out, draw some triangles on the floor, trying to figure out the volume of a sphere, and a Roman soldier was ordered to kill Archimedes and chop his head off. He was the first person to have proved that the volume of a sphere is 4/3 pi r cube. Right? And when he was ordered to do this, Archimedes said, यार ये सब तो कर दो. इनफैक्ट वो देख लिया, आपको उसके हाथ में वो प्रकार वगैरह है ना, वो कह रहा है कि यार गला काट दो, लेकिन ये मेरे ट्रायंगल्स हैं, इनको मिटाना मत. And this is the story. On his tombstone today, there is an image of a cylinder, a cone and a sphere. उसमें वो कोई बाथटब और आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं है. He was, doing all of this very amazing mathematics. Now, this is a wonderful story. एक आदमी जिसने volume of sphere निकालने के लिए अपना गला कटवा दिया. And his experiment were very simple. मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ. ये मेरे हाथ में एक ये हमने डिवाइस बनाई, उसी की कह सकते हैं, उसी की याद में. ये एक हेमिस्फीयर है, मतलब आधी गेंद है, और नीचे ये एक सिलेंडर है. सिलेंडर जानते हैं? सिलेंडर गैस वाला नहीं, वो जो व्हाटएवर, सिलेंडर इज बेसिकली अ सिलेंडर. उसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं. सिलेंडर इज अ सिलेंडर. वो आपकी गैस में जो करता है वो वाला नहीं है. सिलेंडर मतलब जिसका बेस सर्कल हो और कुछ हाइट हो. If you chop it at every section, you will see a circle. Of course, if you chop it, but at an angle, you see a ellipse and so on and so forth. But for now, cylinder, I understand. I'm assuming you understand what's a cylinder. तो ये एक सिलेंडर है. सिलेंडर के अंदर एक ये कोन बिठा दिया है. So what you see, the space here is a cylinder minus a cone, because अंदर एक कोन भी बैठा हुआ है. Hopefully दिख रहा है.
बहुत अच्छी बात है। और ये गेंद है, गेंद के नीचे एक छेद कर रखा है, आधी गेंद है। अब क्या करेंगे, इस गेंद में हम पानी भर देंगे। तो मैंने नीचे से छेद बंद कर दिया और इसमें मैं पानी भर देता हूँ। तो पैंट गीली हो गई, ठीक है। क्या हुआ, वो हंस रहे हैं सब लोग, हो गई गीली तो फिर क्या करें, पानी गिर गया साइड से। तो अब इसमें पूरा ये जो है भर गया। The hemisphere is actually full with water, and I've stopped the flow of water and I leave it right now. You see the water of course comes out from this hole, and you see what will happen is that पूरा जो गेंद का पानी था, आधी गेंद का पानी, ये पूरे इस सिलेंडर माइनस कोन में भर गया। Right? That's exactly what has happened. Right? All the water that was there in hemisphere, filled this cylinder minus the cone. So I can actually say, with all, I mean, at least I have shown, verified that a cylinder minus cone is basically same as hemisphere. Now, if I assume a cylinder to be, whatever, to be, क्या कहते हैं, unit radius, whatever. So ये pi हो जाएगा, pi r square h, r is 1, height is 1. So this is 1. अब assume pi को हटा देते हैं, ये 1 है, cone is 1/3, 1 minus 1/3 is 2/3, which means this must be 2/3, hence the whole ball is 4/3. Now, this is a beautiful proof. It has a lot of context. एक आदमी जिसने अपनी गला कटवा दिया, and the most interesting thing is proved the volume of a sphere before the calculus was invented, which is how we are doing this in our classes even today. हम कभी कहीं पर भी जिस स्फीयर पढ़ाते हैं तो हम कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, right? I mean, in class 11 when we will talk about calculus, but right now what we are trying to say is that there is this beautiful history and context and absolutely amazing mathematics and that is going on, which we don't talk about. We don't do the story. ये चीजें बहुत जरूरी हैं. This is what NEP talks about. These 4 things. One, there is this context. मैं इसको वापस से अपने चित्र को छोटा कर देता हूँ that you can see all 4. There is this context that is extremely important. Stories are absolutely important in making curriculum engaging and inspiring, and this is what we try to do in our lab. What we try to do is make stories, make content which can make classes lively, which can bring back that gleam in the eyes of our children, which can make sure that अगर आज Saturday तो आपको मन करे यार आज जाएं, मतलब बच्चों को it's a beautiful experiment that you can try to figure out how we are doing in our schools. कल से attendance बंद कर दीजिए, राइट, और सबको बोल दीजिए कि पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, चाहे स्कूल में आओ नहीं आओ, सबको 100 नंबर, CBSE भी 100 नंबर दे देगी, this that or whatever, everybody. Imagine how many students will come to our classes. And I think that is what I'm talking about. Are our classes engaging enough, interesting enough? Are they giving something other than just the marks that we are talking about? And that is the joy that I'm talking about, right? That is the most significant pillar of education and most significant pillar of NEP. Now, the good thing is NEP does a great job of saying, yeah, हाँ, ये सब करना है, ये सब करना है. समस्या ये है कि करें कैसे? It's like saying, अच्छे इंसान बनिए, right? मैं तो खुद ही बनिया हूँ, बनिए तो अच्छे इंसान होते हैं. सवाल है कि बनेंगे कैसे? How is it that we are going to implement NEP in the classrooms? And I don't know if I have the answers, but all I can say is that one of the most important things is that we'll have to make our classes engaging and inspiring. Curriculum worth the time, worth the 19,200 hours that our children spend in school. 8 घंटे रोज, 200 दिन, 12 साल हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं. If you multiply all these 3 things together, you get it 19,200 hours. Is it worth their time? Are they getting something that will make a difference in their lives, whether they go to college or not? And I think that is what I'm talking about, right? There was a very interesting test called the PISA test that happened about 2009. कितने साल हो गए? 14 साल हो गए, if I do my math right. 223 में से 2009, 14 साल हो गए. 14 साल पहले वो टेस्ट हुआ था, 2012 में नतीजे आए, and we were 73 out of 73 countries, despite Tamil Nadu and Himachal Pradesh, which were our best states, they took part, right? And government school, private school, सभी लोग. And one of the things that they were talking about was, they said 80% of our students, right, 80% were level 0 and 1, which meant, and this is PISA, there is OECD, the organization, very renowned organization, they conduct this test every 3 years. They were saying 80% of our children were level 0 and 1, which meant इन सारी चीजों का उनकी जिंदगी में कितना असर पड़ा, it is doubtful.
जो उन्होंने 19,200 घंटे या 12 साल की स्कूलिंग करी, उसकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा? डिड इट मेक अ डिफरेंस? हमें तो नौकरी मिल गई, हम तो प्रिंसिपल है सीबीएसई स्कूल के, हम तो हैं, लेकिन वो बाकी 80 पीछे रह गए, उनका क्या हुआ? And so largely, does our education make sense for our general population, whether they go to school or not, whether they go to college or not? I think that is a prime, this education has to make sense in our lives. Let me give you another example, and I don't know, actually मैं वो भी कर सकता था इसमें, वो बाद में करेंगे, but I could have done this poll. How many of you have seen this picture before? This was a front page ad in every single newspaper on 12th June 2012 in India, right? And the question is, what is wrong with this picture? So you are free to write in your chat boxes. What is wrong with this picture? This is exactly, let me not give you the answer, but what is wrong with this picture? फटाफट लिखिए आपके क्या कहते हैं, जो भी अगली बार से हम ये आइटम पूल में भी डाल सकते हैं, ये 2-3 सवाल में, ये वाले में भूल के डाल रहा हूं, मैंने दूसरे पुराने वाले डाले हैं, ये स्पॉट द बग. आई डोंट सी एनी. क्लियरली नॉट विजिबल. यार ये तो क्लियर ही दिख रहा है. इज इट नॉट क्लियर? हाँ, बट स्टिल द पिक्चर, लेट मी मेक द पिक्चर बिगर. इज द पिक्चर ओके नाउ? ओके, तो मैं ये हटा देता हूँ, ये वाला चीज. Hopefully it is visible now. Can you spot the bug? इसको भी हटा देता हूँ. Only 2 things are there now in your whole screen, right? Okay, is it clear now? Hopefully it is clearer. क्या बोल रहे हैं लोग? लोग बोल रहे हैं क्लियर नहीं है. अरे वो ठीक नहीं है यार. ओके, मैं बता देता हूँ. ये रोटी बनी हुई है, उसमें लिखा है wheat, maize, soya, chana, oats, Pycilium husk, and here it says extra protein, bilstein, vitamins, blah 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 blah. और यहाँ लिखा है ingredients whole wheat आटा 90%, blah blah blah. No, we cannot zoom in mobile. अब यार इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता. But anyways, तो अब क्या करें, zoom में दिख नहीं रहा है लोगों को, मोबाइल पे दिख नहीं रहा है. Wheat is 90%, but the pig doesn't reflect as the pie chart. What does the pie chart do? We cannot zoom. Okay. Let me just take you. I don't know how many of you can see, but whatever it is, basically this ad was front page ad in every single newspaper in India. And मैं इसका यहाँ पर थोड़ा सा ये डाल भी देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखता रहे while I'm talking about it. PPT कहाँ है? PPT ये रहा, और इसकी विंडो कैप्चर को कॉपी कर दिया और फेस में यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, पेस्ट रेफरेंस, इसको छोटा कर देता हूँ. Is it possible? Yeah, it is. अरे छोटा नहीं रहा है, रहने देते हैं. अच्छा, हटा देते हैं. डिलीट कहाँ है? डिलीट नहीं हो. Are you sure? Yes. Okay. Sorry about that. ये हमने कुछ हिला दिया उसको. So what I was saying was that this page, this was a front page ad in every single newspaper in India, and they're trying to sell multigrain atta, and there is this pie chart which says wheat and maize and soyabean and chana and oats and husk. So this is 1/6. You see, all of these seems like they are in 1/6 in equal quantities, right? ये 1/6 wheat है, 1/6 और ये बढ़िया चीजें हैं, right? And that's why they are trying to sell this to you, sell this to us, saying this is a great atta where you get all these wonderful things together. But actually, it's not. It is just it is 1/6 of it is wheat, whereas in the pie chart somebody was saying 90% is wheat. और 90% wheat है, मतलब अगर 20 रुपए किलो गेहूं मिलता है तो इसकी कीमत लगभग 20-22-23 रुपए होनी चाहिए थी, और ये 45-50 का कुछ बेच देगा. इवन दो द एक्सपेंसिव थिंग्स आर ओनली 16% इन टोटल. तो ये जो एड होना चाहिए था, ये चित्र होना चाहिए था, वो असली में ये होना चाहिए था. ये इस तरह का होना है. अब आप इस चित्र में अगर वो फोन वाले बोलेंगे अभी हमें दिख नहीं रहा है, बेसिकली यहाँ पर ये सारा गेहूं ही गेहूं भरा पड़ा है, और ये जो मजेदार चीजें हैं, जो महंगी वाली, द गुड थिंग्स दैट हेल्प यू बिल्ड ऑल दिस व्हाटएवर द एड सेज आर राइट स्टक इन हियर. नाउ यू आर नॉट गोइंग टू बाय दिस आटा फॉर द प्राइस दैट यू वांट टू, दे वांट यू टू बाय इट एट.
That is what I'm saying कि हमको क्या जो हमारी जिंदगी में आसपास चीजें चल रही हैं वो समझ आती हैं. This is where the education becomes multidisciplinary. We are looking at the ad. We are looking at the pie chart. We are doing fractions, and we are also looking at, whether we should buy, whether this is good for health or not. This is multidisciplinary. This is related to my life, and this makes a difference in my life. That's what NEP talks about. If we start doing this in our classes, then our classes become engaging. तब मजा आता है और तब लगता है कि यार ये क्लास में जाने का कोई फायदा हो रहा है अभी, other than whatever else that we do. That is what I feel. Like I said, these are 4 things that NEP talks about, which is multidisciplinary approach, right? एक साथ क्या हम काफी सारी चीजों को देखकर सुना सकते हैं. Context, which is history, hands-on models or whatever, हाथों से करके वाला सामान. And चौथा, this sense of wonder. और इसके लिए मैं आपको एक और चित्र दिखाता हूँ. 2 चित्र दिखाऊंगा. आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है? Again in your screens, can you write what do you see on this, whatever you see on your screen? I mean, ये मत बताइए कि पत्ती पड़ी है और नीचे वो कुछ एक जमीन पर पत्तियां पड़ी हैं, वो तो पता चल रहा है, but and maybe this is not a test or a question, but you see a wall. ये wall actually ऊपर से पत्तियां गिर रही थी तो जमीन पर गिरी हुई हैं, उस पे हमने ये चित्र लिया. वॉल पर ये पत्तियों को चिपकाना थोड़ा मुश्किल है, जमीन पर ये पत्तियां पड़ी हुई हैं और उसका चित्र है. And it is fascinating, but let me tell you this whole story. I mean, I don't expect that we'll know what this is, but you see in this picture, and I'll have to probably keep switching between these two, front and this zoom. मैं इसको सोच रहा था कि किसी तरह से इसको ना इसमें face में, is it possible? Let me just give me 1 sec so that transform to screen. Okay. And इसका ये काला काला आ गया. Okay. Professor, while you take time to figure that out, and since we are already on the topic of engaging classroom, I would like to run a poll, would try to understand how many of our attendees already have AV learning in their classroom. So attendee, right now on your screen, you can see a live poll. Do you have audiovisual learning in your school? Please go ahead and register your answers. Yeah. All right, I think the results are quite fascinating. Almost 100% of our attendees have AV learning. So how to take it to the next level is something what Professor is already saying, already giving his tips. All right. So this is the result. 100% of our attendees have AV learning in their classroom. A very small percentage who doesn't have. Yes. बहुत बढ़िया, सबके पास कंप्यूटर है. अब तो कंप्यूटर भारत में नहीं बिक पाएंगे. बहुत अच्छी बात है. We have to move to some other business. Over to you, Professor. But what I'm saying is that there is this one phase, and I'll probably send you this. I mean, it's great that all of you have, but उस कंप्यूटर में हम दिखाएंगे क्या is most critical. What we can build magical classrooms or whatever, and I'll not go there, but I'll give you one very interesting data for all the people who are listening. There is again OECD, right? This organization which does the PISA test. They did a survey of, and I mean in the US per child there is 1.5 computer. मतलब एक बच्चे के पास 1.5 कंप्यूटर है. 1.5 मतलब ऐसे नहीं कि वो एक को आधा एक बच्चा ले जा रहा है, दूसरे में आधा बांट दिया. मतलब 3 बच्चों के बीच में 2 के बीच में 3 कंप्यूटर है. I mean, this is in general because everything is done on a laptop, and they figured out in the last, and this is in Australia also, ये वहाँ की study है, in the last 10-15 years they figured out that all these computers in the classrooms did not make any difference in their grades of mathematics specifically. मतलब कि हमने बहुत सारे कंप्यूटर हर बच्चों को दे दिया, हर बच्चे को लैपटॉप, पैड, दिस दैट व्हाटएवर दे दिया,
does not necessarily mean कि नंबर आने चालू हो जाएंगे या समझना आना चालू हो जाएगा, क्योंकि उस पे यूट्यूब भी बहुत बढ़िया चलता है, उस पे टिकटॉक भी, या जो भी कुछ होगा उसमें इंटरेस्टिंग चीज जब है ही नहीं तो बच्चा क्यों देखेगा, या टीचर क्यों उसमें कुछ काम। हमको बहुत जरूरी है कि अपने टीचर्स की हैंड होल्डिंग करनी पड़े। वी विल हैव टू गिव एब्सोल्युटली अमेजिंग स्टफ टू आवर चिल्ड्रन। कमिंग बैक टू दिस पिक्चर दैट आई वाज गोइंग टू शो, मैं एक्चुअली इसलिए भटक जाता था इसमें। If you give me just a minute, I will add window capture here. Window capture कैसे कर रहे हैं? Window capture इसको बोल देते हैं ए, कुछ बोल दिया, and let me just, instead of zoom I will do a PowerPoint. ये आ गया, सहोदय वाला आ गया, दूसरा आना चाहिए था ना, ठीक, ये आ गया, ओके। एंड इसको छोटा कैसे कर देंगे? सेलेक्ट किया अब छोटा हो जाएगा छोटा, हाँ ये हो गया छोटा। सो नाउ आई कैन डू बोथ थिंग्स हियर, at least ये आपको दिख रहा है। I needed to see this on the screen because I was thinking how is it that I'll describe. So now what you see in this picture is basically a bunch of leaves that are fallen. And let me tell you this story, and I was just fascinated when I read this story. And मुझे लगा यार मेरे साथ धोखा हो गया। I went to school in Kanpur, and then I went and I was studying at Stanford for a while. I was doing chip design in the US. When I was 38, I distinctly remember I read this story. And you can try this experiment at your home. So what you can do is draw parallel lines on the floor, right? समझते हैं parallel line, समानांतर रेखाएं ऐसे ऐसे जमीन पर खींच दी, और उनकी दूरी ऐसे रखिए जितनी 2 matchsticks, right? Almost 2 matchsticks, ये ऐसे ऐसे parallel, and start dropping these matchsticks randomly from the top, right? If you drop 100 matchsticks, exactly 31 will touch the line, the rest will fall between the parallel lines if you drop them randomly. If you drop 1,000 matchsticks, then 314 will touch the line. You know when I say touch the line, जब वो गिरेंगी तो कहीं ना कहीं इस अगर ये लाइन है मेरी ये वाली तो इसको टच करेंगी, बाकी जो होंगी वो इसके बीच में गिर जाएंगी, 314. If you drop 10,000, 3,141, and so on and so forth. Does this ring a bell? This is actually the significant values of pi. And these are all straight lines. हमको क्या बताया गया था? हमको ये बोला था कि यार ये जो पाई है ना, ये गोले और इसकी ये होती है बस, the circumference by diameter. So wherever you see a circle, there has to be a pi. If you look at a cylinder or a cone and area and volume and all of that, everywhere where there is a circle, there is a pi. सीधी लाइनों में कैसे? How did nature know that if I drop 1,000 matchsticks, exactly 314 will touch the line? उसको कौन बैठा है जो इसको कंट्रोल कर रहा है? 314 नंबर कहां से आ गया? नेचर को कैसे पता लगा कि सीधी लाइनों में 314 टच करेंगी? I was absolutely fascinated. I said, this is a beautiful story. This story is called the Buffon's needle problem. And somebody discovered it. Somebody, matlab, of course, Buffon, some French guy called, अच्छा बुफोन बड़ी मजेदार चीज है। बुफोन फ्रेंच वालों का तो बड़ा अच्छा नाम होता है, हमारे यहाँ बफून बोल देते हैं उसको। इट्स द सेम स्पेलिंग, BUFFON। तो इसके माँ बाप को कोई नाम नहीं मिला, बफून नाम रख दिया। एनी केस, सो दिस मैन फाउंड दिस स्टोरी 200 years ago, और आज तक हमने इसको अपने करिकुलम में डाला नहीं है। हमने कभी किसी को बताया भी नहीं, किसी बच्चों को किसी के बारे में चर्चा नहीं की। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, इट गिव्स यू दिस सेंस ऑफ वंडर, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू सी हियर इन दिस पिक्चर। इफ यू काउंट द नंबर ऑफ लीव्स that actually fall on the line and you count the number of leaves that are between the lines, you will get exact value of pi. ये पत्तियों में यहां पड़ा हुआ है, और हमको बहुत बड़े बड़े सेटअप जो भी हम करें वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत जरूरी है कि आसपास की जिंदगी में जो जुड़ी हुई चीजें हैं which can make the child wonder, रातों की नींद और दिन का चैन उड़ जाए, ऐसे सवाल पूछने पड़ेंगे हमको ये बोलना पड़ेगा यार इसमें कहां से पाई बैठा हुआ है। And maybe it is not important that I know the answer, right? As a teacher, maybe I don't, but it is absolutely important for me to introduce my students to things that make a difference. These are all 4 things that things we have to make sure that the curriculum is interdisciplinary, जैसे मैं अभी बता रहा था। Things that we'll have to work on, which are these hands-on models, context, which is the stories, and this sense of wonder. सवाल ऐसे कैसे पूछें जो रातों की नींद और दिन का चैन उड़ जाए। मैं उसके एक और उसमें एक जुड़ा हुआ उदाहरण दिखा देता हूँ। ये चित्र आप लोगों ने देखा है? अगेन let's do this again. ये चित्र फिर से यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके,
इसमें से आपको क्या लगता है कौन सा चित्र सही है? द लेफ्ट वन और द राइट वन? इसको let me cut it so that you only see the thing that is required to be shown. Is the left picture okay or the right okay? Left or right? Left is okay, right is wrong or left is wrong or both are wrong or whatever else. ये अच्छा हो गया, देखो अब आपको चित्र भी दिखाई दे रहा है. I can stop it or on it or off it or on it or off it or on it. तो कर सकते हैं? ये किसी और में नहीं कर सकते हैं. This has to happen in OBS and it's a free software. And so we should, I hope people start using. This is a beautiful software, by the way, using which we are doing all of this magic. We can shift between frames, this, that, overhead, item pool, Chrome, ये वो कुछ भी कर सकते हैं. At a click of a button, I can stop this and that. But coming back, क्या है ये चित्र कौन सा सही है? Some people say, and in fact, this is a poll. Maybe we can switch on the poll. Hold on, let me start that poll here. कहाँ पर था? Item pool में finish and reveal. Actually, सबसे पहला ये क्वेश्चन जो था वो हमने कुछ बनाया था. Back. Okay, maybe you can go to your, yes, you can go to itempool.com/ccl/live. ये है itempool.com/ccl/live. ये वेबसाइट है. यहां पर जाएंगे तो आप इस पोल का आंसर दे सकते हैं और वो जो आप आंसर देंगे यहां स्क्रीन पे दिखने लग जाएगा. हाउ मच वाटर ऑन अर्थ? नॉट इनफ, 75%, 0.1%, और हु केयर्स? ये अच्छा है. कम से कम एक जना तो दे जवाब. आपको क्या करना है? यू हैव टू गो ऑन दिस वेबसाइट कॉल्ड itempool.com/ccl/live. They are some company who basically let the audience interact online and so that the answers are visible right here on my screen. Professor, can you copy paste the URL on the chat box? Sure, I can do that. इसको Zoom में डाल देते हैं. Zoom कहाँ रह गया है भाई? Where is Zoom? Here is Zoom. Okay, I shall do that. Share results. Stop sharing. ये. Okay, where is this chats? Okay, itempool.com/ccl/live. This is the link. Please go here and Control C. Yes. http:// ऐसा भी कर देता हूँ. All right, देखिए कुछ तो उत्तर आने चालू हो गए, है ना? ये देखो आपको दिखने चालू हो जाएंगे आइटम पोल में. हाँ, एक आंसर 7 है, एक 2 है, एक 8. You see these live bars that are happening. This is a beautiful thing. And I don't know what the right answer is till the time I reveal the answer, right? ठीक है. तो चलिए, and in the end we will talk about a very personal question and hopefully ठीक है. मैं आंसर रिवील कर देता हूँ समय का मैं. Most people have said, some people are saying C, some people are saying A, not enough, B, तीनों सही हैं. किसी ने ये नहीं बोला, no, who cares? But the point that we are trying to make and is that both pictures are correct. You see, the surface water is 75% of Earth is full of water, but that water is only 3 kilometers deep, 3 kilometers, right? So overall, if I collect the whole water, पूरा पानी अगर इकट्ठा कर लिया और उसको एक बॉल में बनाकर धरती पर रखा तो उसका साइज इतना हो जाएगा जो ये आपको इस स्क्रीन में दिखाई दे रहा है. That's it, 0.1%, because its size will be 10,000 whatever. ये यहाँ पर देख सकते हैं. इससे हो देना है. इससे वाला में करना है. 1 minute. Yeah. So there you go. The diameter of Earth is 12,000. Water on Earth is 1,300. इसके बगल में जो आपको छोटी सी बॉल दिख रही है, that is fresh water, मतलब पीने वाला बिना खारा पानी. वो तो 0.0001% है. और उसके ऊपर भी अगर लिक्विड वाटर, मतलब वो सरफेस वाटर देखेंगे तो और भी छोटा है. ये चित्र देखकर ये समझ में आता है कि सच में पानी की स्थिति गंभीर है. This is the difference between conventional and whatever. Now what I have done by this picture is that I have shown a very different take on the same thing, right?
हमने वही चीज दिखाई, कुछ झूठ नहीं दिखाया, लेकिन अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स. वी कैन कीप सेइंग व्हाटएवर वी कैन टॉक अबाउट, बट इमेजिन नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल इंटरडिसिप्लिनरी, राइट. इसमें हमने कुछ चर्चाएं करी, इसमें हमने मैथमेटिक्स भी कर दी, इसमें हमने ज्योग्राफी भी कर दी, इसमें हमने एनवायरमेंटल साइंस कर दिया, एंड देन यू नो व्हाटएवर एल्स दैट वी वांट टू टॉक अबाउट, राइट. एंड दिस इज द पिक्चर दैट वी आर ट्राइंग टू शो. हमको अपने करिकुलम को इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनाना पड़ेगा. और अगर हमने वो नहीं करा तो we will very soon be extinct species in my opinion. There are so many people doing very interesting work on the internet, and as teachers and as principals, right, if we have to empower our teachers to do interesting and engaging things in our curriculum. अब मैं फटाफट अगले 5 मिनटों में आपको कुछ कुछ खिलौने दिखाता हूं, जस्ट टू कन्वे, एंड ईच ऑफ देम इट टेक्स अबाउट द होल सेशन. एक पूरा घंटा लग जाएगा एक एक चीज को करने में. एंड क्या 4 पैमाने हैं इनको करने के? हैंड्स ऑन, राइट. लेट मी टेक यू बैक टू द सेम स्लाइड. क्या 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 4 पैमानों में नापना है? एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी है, एक हैंड्स ऑन है, एक कॉन्टेक्स्ट या कहानी बहुत जरूरी है, और चौथा सवाल क्या पूछें कि रातों की नींद और दिन का चैन उड़ जाए. Giving our children that sense of wonder, both to our teachers and children. 4 चीजें हैं जिसके ऊपर एनईपी मेरे हिसाब से ये 4 खंभों पर टिकी हुई है. पहला है मल्टी डिसिप्लिनरी, दूसरा है हैंड्स ऑन, और तीसरा है कॉन्टेक्स्ट, और चौथा, मैं इनका उदाहरण दे रहा हूं. मैंने कहानियां भी आपको सुनाई, खिलौने भी दिखाए, और भी दिखाता हूं. एंड होपफुली क्या कैंसिल कर लेते क्या ऑन है? हो गया. अब क्या करें? अब बचा सकते हैं. And these, चलिए. before तो ओरिजिनली तो हम शुरू में ही ये भोंपू बजा के आपका स्वागत करते हैं, पर हम भूल गए. तो आपका सभी का स्वागत है लीड की इस वेबिनार में. और इसके ऊपर इन्होंने कागज नहीं बिठाया, बट अगर कागज बिठा देते तो बहुत सही हो जाता. हमने बनाया कैसे? एक ये पाइप लिया, पाइप के अंदर, अभी रहने दो, पाइप के ऊपर ये जो आपके घर की, अब पता चला है लोगों ने अपने घर के बाथरूम की फिटिंग तोड़ तोड़ के बना दिया. ऐसा नहीं करेंगे. बाजार में 7 रुपए का आता है ना, ये खरीद लेंगे और उसके ऊपर एक पन्नी लगा देंगे. पन्नी समझते हैं आप? वो जो बाजार में थैली जो आपको नहीं लानी चाहिए बाजार से, वो you should not be getting your vegetables in a panni. Please carry your bag, cloth bag. But अगर आप गलती से ले आए तो उसका एक हल्का सा टेप चिपका दिया. एक ये रबड़ है which is a washer. This pipe actually has to be loose inside this. I put this washer on this pipe, put it inside, and then blow my lungs out. Why? Now when I blow from here, there is a gap and the air can't come out from here, so it will go up and come down. As a result, this thing will vibrate. बहुत बढ़िया. और इसके ऊपर अगर आपने कागज लगा दिया और उसको ऊपर नीचे समझाते हैं, सरकाते हैं, या यहाँ पर छेद कर दिए, so this is your बांसुरी. एंड 5 रुपए की बांसुरी है. सोचिए क्लास में कितना मजा आएगा. अगली बार आपको फीस बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे आपके स्कूल में ही आएंगे. ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, बट यू गाइस नो बेटर, यू नो हाउ टू रन योर स्कूल्स. हाँ, ये कृष्ण भाई ये लेकर आ गए. टेप क्यों लगा दी? टेप से नहीं होगा. टेप से यू डोंट नो द डायमीटर ना, इसको छोटा रखना है. मैं एक और बहुत सुंदर, और इसी की सीरीज में ये रेफरी की विसल है ना, ये हमारे पास स्ट्रॉ है. स्ट्रॉ के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया है. किस चीज का टुकड़ा है? ये जो कैन होती है, कैन का टुकड़ा. कागज भी, जीएसएम पेपर भी लगा सकते हैं. और ऐसे मोड़ दिया, और इसके आगे स्ट्रॉ बिल्कुल इसको इसके आगे रख देंगे, जहां से हवा निकलेगी इसके आगे. आई होप जूम में सुनाई दे रही है. जूम में सुनाई दे रही है, क्योंकि कई बार ये सॉफ्टवेयर वाले लोग ये ऐसे तेज आवाजों को कैंसिल कर देते हैं, तो हमको वो थोड़ा सा. If I leave it like this, it will not. I have to cup this. This is exactly like a referee whistle. What happens is when the sound comes out from here, right, it gets broken into 2 parts by this sharp edge, right, and some part of it comes down and some part of this vortexes are created and this becomes a sound box because I have cupped it. और ये रेफरी की विसल, अगर इसमें आप कुछ वो डाल दें छोटे छोटे दाने, तो ट्रर करके जो रेफरी की विसल है वो बजने लग जाएगी. उसी की, and I'm just going to do sound for you right now, right? And these are 3 CDs, right? और एक CD अंदर से कटी हुई है बट ऑफ सेंटर रखी है इसको, और यहाँ से कटी हुई है. तो इसके ऊपर हम ये देखिए यहाँ से कटी हुई है. ओवरहेड से दिखाएं क्या? ओवरहेड से दिखाएंगे, दिखा सकते हैं. ओवरहेड, ये CD है और ये ऊपर से कटी हुई है यहाँ से. नहीं, आपको ना इसमें कटी हुई CD भी रखनी चाहिए, बट नहीं तो पता नहीं चलेगा.
और इसको जब यहाँ से फूंक मारते हैं कुछ नहीं होगा. अब इसको मैंने यहाँ पर एक अपना हाथ ऐसे रख दिया, आपको लग रहा होगा ये कैसे हो रहा है, कुछ नहीं हुआ. And it is just basically a simple CD. 3 CDs, one on top, one on the bottom, the other, and let me draw this picture right here. तीसरी वाली जो है, ये तीसरी वाली जो CD है वो एक तो साधारण है, ये वाली बस ऐसे इसमें से एक सेक्टर कटा हुआ है, that's it. और बाकी दोनों सीढ़ियाँ गोल हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और ये जो बीच वाली है ये थोड़ी हटी हुई है, तो इस तरह से बीच वाली ये ऐसे है, ये दिस इज द मिडिल वन, दिस इज द बॉटम लेयर, एंड इसी के ऊपर एक टॉप लेयर आ जाएगी. दैट्स ऑल देयर इज. आप आराम से बनाइए. अगर आपको लगता है कि आपको बनाना है तो आप हमारा सीरीज देख सकते हैं, 30-30 स्टेम, द साइंस ऑफ 30-30 एकलव्य में साउंड के उसमें हमने ये करा है. नहीं बजेगी. प्यासी चिड़िया, प्यासी चिड़िया बज रही नहीं है, लेकिन इसी चिड़िया को हमने पानी पिला दिया. अरे भैया पिला दिया, इसको पानी पिला दिया. आप कहोगे पानी पिला दिया, डुबो दिया, इसको पानी में डुबो दिया. चलो, और अब इसको हम जोर की फूंक मारते हैं. आवाज आ रही है? और इसके अंदर से अगर हमने इस चिड़िया के पेट से पानी निकाल दिया, प्यासी चिड़िया. many things, and maybe this is our most interesting and one of the simplest toys that maybe you can do, demonstrate. इसमें पानी थोड़ा सा और भर दें. What I have here is just a piece of simple straw, I mean a piece of rubber and 2 straws, right? And what I have done is that's it, piece of rubber, 2 straws, नीचे एक डंडी लगा दी. डंडी की ज़रूरत नहीं है but लगा दी, it helps to hold. What I'm going to do is take this glass of water, put this straw here and blow. All right. Ab what I'll do is turn it upside down, put it like this, and now blow. I don't know दिखा कि नहीं, but this becomes like a spray. और मैं अगर आपको ऐसे करूँगा तो कैमरे में चला जाएगा, तो ऐसे नहीं करूँगा. ठीक है, it's a spray. And Professor, then someone has a क्या very हो गया? interesting question. Someone asked on the chat that what is the principle behind अरे प्रिंसिपल तो आपके ऑफिस में बैठे हैं यार, उनको क्यों दुखी कर रहे हो? प्रिंसिपल को प्रिंसिपल की जगह रहने दो, पहले मजे ले लो. अरे यार सारा वेस्ट कर दिया, लीड की पूरी वेस्ट हुई, बिल्कुल ही वेस्ट. So I'm just saying that principal, let the principal, it doesn't matter what the principal is. See, that is where in fact, and I'll tell you one story. आपने बीच में बोल के ना सारा वो गड़बड़ कर दी, but I'll tell you a very interesting story. So we were part of this NEP committee where we're going to discuss ki, I'm part of the textbook committee also. We are writing the science and math textbooks. So there was this huge discussion कि यार आजकल बहुत बोझ बढ़ गया है बच्चों का, and हमें curriculum कम करना चाहिए, right? So we need to reduce the curriculum because too much curriculum and all of that. And so should we have quadratic equations in class 10? That was the question. और 9th or 10th में जो हम पढ़ाते हैं, should we have quadratic equations? And the question was, and so maybe that's a poll for you. Maybe that's a poll. Maybe I don't know if you know. Do you know how to create poll? Marketing comms. If you know, then maybe you can put this poll. My bachas will ask how will happen. Yes, I will tell you. But maybe you can create a poll. Should we teach quadratic equations in class 10? Because nobody, I guarantee you, will ever use quadratic equations in their lives unless, of course, you are a math teacher. अगर आपकी नौकरी टिकी हुई है गणित पढ़ाने पे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, वरना आपको क्यों चाहिए यार? आप बाहर सड़क पे जाकर किसी से आस्क एनीबॉडी ऑन द स्ट्रीट, डू यू नीड क्वाड्रेटिक? सर आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? मे बी यू शुड डू अ पोल. सर डिड यू एवर यूज इट इन योर लाइफ? मैडम आपने कभी यूज करा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कोई नहीं बोलेगा. Nobody ever uses quadratic equations in life. 99.99999%. And so why should we teach quadratic equation, right? And so the answers were like that, right? Quadratic equation नहीं पढ़ानी चाहिए क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कभी काम नहीं आएगा.
So why should we teach that? Right? Should we teach it or should we not? Most people will say यार नहीं पढ़ाना चाहिए. कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर उससे फिर आगे की मैथ करने में आसान होता है. Of course, क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ाएंगे तो आगे की मैथ नहीं कर सकते हैं, which is true. But how many of need that high whatever math that we do? Most of us don't. So even if we don't do this, we are okay, right? It turns out. Now let me ask you another question. Or give you another scenario. Imagine you have a ball in your hand and a bat in your hand, right? सबके हाथ में एक बैट है और एक बल्ला है. सबके पास एक बैट है, एक बॉल है, और सबने लेकर आपने बोला कि अब बॉल को लेकर बैट से जोर का मारो, जितनी जोर का मार सकते हो, जिस एंगल पर जहां पर भी जैसे भी मारना है मार दो. बल्ले को लिया, बॉल को जोर से मार दिया. इमेजिन विराट कोहली इज ऑल्सो देयर एंड धोनी इज देयर एंड एवरीबडी एल्स इज देयर. 90 डिग्री पे मारोगे आप तो क्या होगा? खट्टे से सर पे आएगी, गड़बड़ हो जाएगी. डोंट डू दैट. You can hit at any angle, anybody, whether Virat hits it or Dhoni hits it or you hits it or marketing hits it or whoever hits it, right? The ball will fall exactly 5 meters in the first second. कोई भी बॉल को किसी भी बैट से कितने भी एंगल पर कितनी भी जोर से या धीरे से मारे, बॉल पहले सेकंड में 5 मीटर ही गिरेगी. In the second 15 meters. In the third second 25. In the fourth second 35, in the fifth second 45, and so on and so forth. 5, 15, 25, 35, 45, 55. Every single ball, every single person, any person, right? हमेशा होगा ये. क्यों? क्योंकि यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है. जब कभी हम, but if you're going to do, today we are going to do quadratic equation, which is y is equal to x square plus bx minus c or plus c, and the roots of quadratic equation are minus b plus minus root square of b square minus 4ac upon 2a, and this is the equation. These are the coefficient. Please find the roots. अगर हमको इस तरह से quadratic equation पढ़ानी है तो कोई वैल्यू नहीं है यार. जब हम कभी कोई बढ़िया पिक्चर और पेंटिंग या म्यूजियम में देखने जाते हैं तब कभी पूछते हैं कि ये जिंदगी में कभी काम आएगी कि नहीं? नहीं पूछते ना. तब तो नहीं पूछते, तब तो मजा आ रहा होता है. पढ़ाई के आते ही ये पूछने लग जाते हैं यार इससे क्या मिलेगा मुझे, नौकरी मिलेगी कि नहीं, नंबर आएंगे कि नहीं. अरे मजा आएगा कि नहीं, ये कभी पूछा? 45 मिनट पहले इस क्लास में आए थे, कभी पूछा कि आज 45 मिनट अपनी जिंदगी के 45 मिनट रिवाइंड करके पूछो क्या सोच कर आए थे? कुछ मजा आएगा? नहीं सोचा ना. क्या पॉइंट है? द बिगेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट NEP, इफ इन माई ओपिनियन, विल टॉक अबाउट इज द एंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट. आर वी एंगेजिंग द स्टूडेंट? प्रिंसिपल्स बाद में आएंगे, पहले एंगेजमेंट आएगा. मतलब आई कैन राइट इट ऑन अ पीस ऑफ स्टैम्प पेपर. बहुत जरूरी है एंगेजमेंट. प्रिंसिपल अपने आप आएगा. प्रिंसिपल को आने दो, उसको बोलो अपने कमरे में बैठो प्रिंसिपल साहब, हम बाद में आना. आप पहले मजा आया कि नहीं? अगर आपको मजा आया प्रिंसिपल आएगा. क्यों? मजा आ गया. अब मन में, इनफैक्ट वी विल नॉट इवन टेल यू व्हाट द प्रिंसिपल इज. प्लीज गो फाइंड आउट योरसेल्फ. ट्वीक इट इन 50 डिफरेंट वेज. ये जो मैंने आपको खिलौना बताया इसको अलग अलग एंगल पर बनाओ. देखो किसका पानी सबसे ज्यादा दूर जाता है यार. आपको समझ आ जाएगा कि क्या चक्कर है. ज्यादा पतला एंगल करता हूं तो ज्यादा दूर नहीं जाता. क्लास अंदर क्यों करेंगे, आज भारी कर लेते हैं, राइट. एंड तीसरी चीज तो आपने देखी नहीं क्योंकि पहले प्रिंसिपल पूछ लिया. वी कॉल इट 3 in 1 बिकॉज एक तो हमने क्या करा था, सबसे पहले इसको ऐसे रखकर आवाज निकाली थी. इधर से करते हैं तो आवाज नहीं आती है, इधर से, और इधर से करके स्प्रे. और इसके बाद हमने जब इसको ऐसे, यार मेरा कंप्यूटर हटा ले, तो पहला 2 लाख का ये 2 लाख की वर्कशॉप हो गई है, तो हमें कुछ मिल भी नहीं रहा, पता चला 2 लाख का नुकसान हो गया. ये ले भाई, इसको ऐसे अगर मैं घुमाऊँ, सो आई डोंट, ये एक्चुअली कैमरे में दिखेगा नहीं, बट दिस बिकम्स लाइक अ स्प्रिंकलर. आई डोंट नो इफ यू सीन दोज, बट अक्सर जब अगर कहीं खेतों में होता है तो वो स्प्रिंकलर है ना, वो स्प्रिंकलर की तरह गोल 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 जाता है. बड़ा सुंदर एक चित्र भी है, मैं स्प्रिंकलर का आपको दिखाता हूँ क्योंकि बात चल रही है. लेट मी शो यू दिस पिक्चर. NEP में जो आपको पिक्चर दिखाई थी ना वही दिखाता हूँ, PPT. एंड प्लीज नोटिस एंड आई विल स्टॉप इट. ओके, 7 अगस्त जोड़ दे मटेरियल और ओके, प्लीज वॉच केयरफुली. ओके, जिनसे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. प्लीज वॉच केयरफुली. Is the water going in a spiral? This is the same sprinkler. It seems like it is, but if you carefully watch the path of each droplet, just watch the path of one drop, this circle which is tracing the drop, they are actually going in a straight line. This is Newton's first law or second law, या जो भी आप कहना चाहते हैं. क्या है?
भाई जब हवा में कोई आपको लग रहा है गोल 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 ऐसे जा रहा है, नहीं जाता है, वो सीधी लाइन में जाएगा। क्यों? जब हवा में है तो नीचे ही जा सकता है, उसकी दिशा चेंज करने के लिए तो कोई फोर्स ही नहीं है। पहले तो हम खेल लेना, तब प्रिंसिपल की चर्चा करेंगे। पहले तो हम हर बच्चे को ये खिलौना बनवाएं, हर बच्चे के साथ बाहर जाएं, और फिर टीचर कहेगी यार चलो आज देखते हैं किसका पानी सबसे ज्यादा दूर जाता है। लेट्स ऑब्जर्व इफ द ड्रॉपलेट इज गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन और इज इट गोइंग इन अ स्पाइरल। इफ वी आर नॉट इवन आस्किंग दीज क्वेश्चंस, देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग द प्रिंसिपल, इन माय ओपिनियन। अगर आपने बता दिया कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन है या फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ, तो मजा खत्म हो गया, वेस्ट, कोई पॉइंट नहीं है। फर्स्ट वील हैव टू एक्सप्लोर, पहले खेलना पड़ेगा। आई मीन इसका वो भी बहुत क्लियर है, वो क्या बोलते हैं, यू नो द वे वी डू थिंग्स। फर्स्ट वील हैव टू मेक एंड प्ले, सेकंड वी हैव टू टिंकर अराउंड एंड देन एक्सप्लोर कि क्या करने से क्या हो जाता है, ये करने से ये हो जाता है वो, एंड देन ऑफ कोर्स ट्राई टू यू नो पुट देम टुगेदर एंड कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ अ थ्योरी विच प्रॉब्ली मिस्टर न्यूटन डिड मेनी ईयर्स अगो। और क्योंकि न्यूटन की बात चल रही थी तो मैं आपको ये एक छोटा सा वो दिखा देता हूँ। ये आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। दो स्ट्रॉ है, ये बेंडेबल वाली स्ट्रॉ है, एक स्ट्रॉ को दूसरी स्ट्रॉ के अंदर डाल दिया, ठीक है। और आज हमने A4 तो करा ही नहीं, बट ठीक है, दैट्स ओके। एक स्ट्रॉ को दूसरी स्ट्रॉ के अंदर डाल दिया। मुझे चश्मा बनना पड़ेगा। हाँ, हो गया होपफुली। एंड अब इसको मैंने ऐसे रख दिया, यू सी, लाइक ऐसे आपके सामने, और मैं जोर की फूंक मारता हूँ, क्या होगा? इसको ऊपर करता हूँ, नीचे आ जाता है, और इसका मुंह नीचे से ऐसे उल्टी तरफ कर देता हूँ। अब क्या होगा? ये कलर थोड़ा सा दूसरा ले सकते थे, बट दैट्स ओके। अब मैं इसका साइड इस तरह से कर देता हूँ। सो व्हाट आई हैव डन इज इट गोज लाइक दिस एंड देन कम्स आउट ईदर ऑन माई साइड और ऑन मे बी योर साइड, ओके। एंड यू सी नाउ व्हाट हैपेंस। अगर इसको उल्टा घुमाना है तो दूसरी दिशा में कर दिया। आई गारंटी यू टेक दिस टॉय इन द मार्केट and put your hands behind and start blowing, every single person there will ask you कि आप क्या कर रहे हो यार, हमें भी बताओ, बहुत मजा आ रहा है हमें। आपको ब्रांडेड क्लोथ पहनने की जरूरत ही नहीं है, सारा ब्रांड आपके पास। कोई बड़ी आपकी शर्ट को नहीं देखे कौन सी शर्ट पहनी है, इसका क्या ब्रांड है, सब आपके स्पिनर को देखेंगे। वाई? बिकॉज दिस इज वट एवर इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वट एवर वी आर। ये ज़्यादा अच्छी तरह से दिखे शायद, बिकॉज इसका कलर जो है हमारी स्क्रीन जो है ठीक से आ जाएगा। बट यू सी ये ऐसे है, अब बेटर दिख रहा है ना, ये सीधा है और ये साइड में चला गया। इसको मैंने अपनी तरफ करा, इसको आपकी तरफ करा, लेकिन अगर इसको साइड में करा, because when the air comes out like this, you know, it'll try to push it like that, and अगर मैंने मुंह में इसको थोड़ी सी ढील छोड़ रखी है तो ऐसे घूमेगा। अगर ये इसको ऐसे रखता हूँ तो ये दूसरी दिशा में घूमेगा। वेरी सिंपल बट वेरी इंटरेस्टिंग। शुरू में खेलना पड़ेगा, अलग अलग तरीकों से उसको रखना पड़ेगा, तब आप सोच सकते हैं। और बच्चे अपनी न्यूटन तो चले गए 500 साल पहले यार, मतलब 400-500 जितने भी साल पहले, उनको चले गए, उनको जाने दो। हम अपनी खोज के निकाले ना। When we do this and we try to explore, we will try to create our own. This is in the pedagogy, this is also called creationist approach. क्या बोलते हैं? Creative? मुश्किल शब्द। Constructivism। या आपने कोई चीज करी, आपने उसको अलग अलग तरीके से परखा और फिर आपने उसको अपनी चीजें कंस्ट्रक्ट। अब ये आपकी लॉ हो गई भाई। न्यूटन चले गए, आपने क्या देखा यार, इधर से धक्का आता है ना तो इधर जाता है। रॉकेट में भी मैंने ऐसे देखा है, नीचे जाता है तो इधर आता है। और स्प्रिंकलर में भी ऐसे, इधर निकलता है तो पीछे घूमता है। तरह तरह की चीजें देख ली। किसी को एक चाटा मारते तो वो भी उल्टा मारता है, वो नहीं है। बट यू नो, यू ट्राई ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड देन यू फिगर आउट, यू क्रिएट योर ओन लॉ और वट एवर इट इज। एंड दैट इज वॉट इन माई ओपिनियन यू नो NEP is talking about. Actually समय भी हो गया है। I think maybe in the end I'll just show you this and then close. We have about 700 toys and let me take a minute and show you ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था and वो PPT ये आ गया। In the end of course मैं आपको खोजी डब्बा दिखाना चाहता था। खोजी डब्बा कहाँ है हमारा?
फाइल ओपन, हाँ ऊपर उठा लो अगर है तो आराम से. Audience, we are almost at the end of our webinar. Why don't you take this moment to send us your questions? If there are any questions, we want to know Yeah, more. there are lots of questions. Send us your questions on the chat, please. ठीक है. By the time you है नहीं हमारा वो, let me just make sure that. ठीक है. Let me show you this interesting thing in the end, and then of course we will take इसको थोड़ा और पास में ले आते हैं. Okay, this is just an amazing game that I thought I will show you. या इसमें दिख नहीं रहा है ये. नहीं बट ऐसे क्यों फेस में ही दिखा देता है ना. फिर यहाँ पे अब दिख जाएगा. अभी ठीक है ना. This is good. Let it be like that. So I have these cards, and they have 26 cards, and they have A to Z written on them. यही देख लेते हैं. ओवरहेड में ज़्यादा बेटर है. So I have these cards with A to Z written on them, and अगर आपको अच्छा लगे तो ताली ज़रूर बजाएंगे. ओ बट आप बजाएंगे तो हमें सुनाई नहीं देगा यार. ये बहुत चक्कर है लीड का. We can't hear. And if I ask you to sort them, sort मतलब आप ढूंढिए. इसमें पहले एक लगाइए सबसे आगे का है, तो आपको ए ढूंढना पड़ेगा. अरे भाई उनको बोल दो, बाद में करेंगे. ओह ये मिल गया. अब आपको बी ढूंढना पड़ेगा. And if I have to find B, then there is B, and इसमें तो बहुत समय लग जाएगा. तो we don't have that much time. What we are going to do is use this stick. Okay, so I have this stick and this, and what I'm going to do. और इसमें कोई हाथ की सफाई नहीं है. I mean that's not the intention also. And what I'll do is put this stick in here, and कुछ ताश को इसमें अटक गए तो वो निकाल. और कुछ then I'm putting this in the next hole, and same thing putting in the third hole. There are 5 holes, and all that is happening is I'm pulling these cards out, and then fourth hole and the last hole. देखिए last one, ये last hole में डाल दी रंडी. और अभी कुछ जादू हो जाना चाहिए, और अगर जादू हो गया तो you will have to send us 100 rupee checks. चोर के सभी के चेक्स का इंतजार है हमें. IIT गांधीनगर CCM. We are of course also a non-profit. We run our lab in IIT Gandhinagar. It'll be great to have your support regardless of what you do. Please make sure you subscribe to our channel. But अभी हमने करा क्या? हमने सिर्फ ये साधारण ताश के पत्तों में कुछ छेद कर दिए, और इस तरह से करे कि उसमें डंडी डाले तो शॉर्ट हो जाते हैं. ऊपर 5 छेद हैं, लेकिन उसके बाद यहीं तक नहीं रुके. उसके बाद ये 3 छेद करके भी यही काम कर दिया. उसमें 2 तरीके की डंडियां हैं. दिस इज द बेसिक ऑफ कंप्यूटर साइंस. When the first year students come to our IIT, this is how we will teach them, programming. हम सबसे पहले ये उनसे एल्गोरिथम लिखवाएंगे. हमने अपने बच्चों को बोला कि यार इस कंपनी में जाओ, वहाँ से प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी. ये बड़े बड़े कमर्शियल लोगों को बोला कि अब नहीं तो मतलब मे बी आई शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड से दिस राइट. these days there is a cough of programming. बड़ी बड़ी कंपनियां आके बोलती हैं आपने अपने बच्चे को प्रोग्रामिंग नहीं सिखाई तो मर जाएंगे बच्चे, भूखे मर जाएंगे. दिस अरे यार वो रटवाना, लैंग्वेज सिखाना इज नॉट. द एबिलिटी टू थिंक इज प्रोग्रामिंग, राइट. Can our children write the division? Let me, okay, maybe in the end, this is a homework for you, which is what, again, NEP और क्या कोई नई बात नहीं करती है. What is important is to get the right answer rather than what is important is to know why the answer is right rather than getting the right answer. Just a simple example. हम कभी भी 2 नंबर लेते हैं तो किधर से ऐड करते हैं? प्लस माइनस, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, राइट. ऐड करने के लिए ऐसे करते हैं, माइनस करने के लिए भी ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए भी ऐसे करते हैं, डिवाइड करने के लिए वाई
Why is it that when we divide, we go the other way than all the other three operations? Can we write an algorithm to divide just the way we do addition? Right? And I think that is what I'm talking about. हम लोग ने procedure के ऊपर इतना ध्यान दिया कि ये सोचा ही नहीं कि process चलता क्यों है. We will have to make our children think about why the answers are right and not focus too much on the right answers. When we do this, we will not have to worry about कि इसमें आपने पाइथन में लैंग्वेज लिखा, सी में लिखा, क्या लिखा, यार ये करा कैसे है, हुआ कैसे, चला कैसे, इसके पीछे अंग्रेजी में, हिंदी में, whichever language that we are going to talk about, how does this work? Can we write the basic algorithm of division? Can we see that this is actually binary? ये हमने binary में काम करा है. This is exactly how all computers will work. And I think this is what we'll have to focus on. This is what will make our classrooms interesting and engaging. आपने करा क्या, कार्ड सॉर्ट कर दिया, आपने ABCD सिखा दी, लेकिन आपने उसके अंदर कंप्यूटर साइंस के एल्गोरिथम्स भी डाल दिए. और इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं और भी हो सकती हैं. आज के लिए सिर्फ इतना ही. आई होप यू नो लाइक द प्रोग्राम और एंजॉयड. प्लीज मेक श्योर यू वॉच this is who we have worked with, and this is our contact, ccl@iitgn.ac.in. This is our channel. We have about 2.5 lakh subscribers now because of the program that we've done. This is our website. Please make sure you visit the website and subscribe to the channel. If you have any comments, questions, please send me an email. मैं करता तो हूँ काफ़ी सारी website मतलब one of these talks, and I hope you send me an email. My email is very simple, manishjain@gmail.com. तो आप ईमेल भेजिए या ccl@iitgn.ac.in पे भेजिए. आपको कोई भी, जो मैंने आपको होमवर्क भी दिया, अगर वो भी आपको लगा और आपको करना, maybe just maybe I should do that homework. I had come prepared for that homework. So Professor, let me just. We have a question from one of our attendees, and he asks, how can you teach accountancy with the help of NEP? Is there a way to make accounts as well as engaging as your session? We are accounts करे नहीं, but I'm sure account में तो सबसे ज़्यादा पैसे आए गए. We do a lot of work with using the Google, the Excel में sheets होते हैं ना. तो वही चीज़ हम बना के करते हैं, वही चीज़ शीट में करते हैं. नेक्स्ट टाइम अगर आप बोलें तो हम you send me an email, I'll send you 20 absolutely amazing apps that we've done on वो. ओके, चलिए आपको उदाहरण दिखाता हूँ. ये कागज है, इसको A4 बोलते हैं, राइट? डू यू नो व्हाई वी कॉल दिस A4? A4 क्यों बोलते हैं? वेरी स्पेशल कागज है. ये कागज को A4 क्यों बोलते हैं हम? A4, प्लीज डू प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग. ओके, A4 बोलते हैं क्योंकि ये कागज का एक स्पेशल डायमेंशन है, राइट? This will take long, so I'll cut it short. But the ratio of this length to breadth of this paper is so unique. And whatever that ratio is, let's assume whatever it is, there is some ratio. If I put it in half, that ratio remains the same. This ratio of length to breadth is same as this ratio, is same as this ratio, is same as, if I fold it in half again, is same as this ratio, is same as this ratio, is same as this ratio. I fold it any number of times, this ratio remains the same. वो sheet कहाँ है? वो A4 है. बस. You see, this is A4. It's called A4 because it is A4. And if I fold the A4 in half, this is A5. Okay, ऐसे आधा है. बट अगर हमने इसको ऐसे रखा, इसकी लंबाई के साथ लंबाई और चौड़ाई के साथ चौड़ाई, तो ऐसे A5 है. एक और फोल्ड करा तो A6 है, एक और फोल्ड करा तो A7 है. यू सी ऑल ऑफ दीज एंड्स आर पॉइंटिंग इन द सेम डायगोनल, विच मीन्स देयर रेशियो हैज टू बी सेम. इफ आई फोल्ड दिस पेपर 43 टाइम्स, इट विल बिकम एज थिक, मतलब इसकी थिकनेस इतनी हो जाएगी दैट आई कैन रीच द मून. And this is a homework for you. Why do we call it A4? Because it comes out, this ratio is very special. It is square root of 2. Because only with that number can it happen कि आप आधा करें तो ratio same रहे. No, not with any other. This whole thing is coming because this is A0. इसका जो रेशियो है लंबाई से चौड़ाई का, ये A0 है, और अब इसको आधा कर दिया, ये रेशियो सेम है.
और ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया. And we started with 1 square meter, which is what A0 was. A0 is very interesting. Its ratio is square root of 2, just like any other paper, but it's square root of 2 and its area is exactly 1 square meter. So this is half square meter, this is 1/4, 1/8, 1/16. All right. So that brings me to the question, which means that जो हमारा साधारण ये जो कागज है A4, इसका एरिया एग्जैक्टली 1/16 स्क्वायर सेंटीमीटर है, स्क्वायर मीटर, 1/16 स्क्वायर मीटर, यानी 625. आई कैन शो यू इन द ओवरहेड. दिस एरिया ऑफ दिस पेपर इज एग्जैक्टली 1/16 स्क्वायर मीटर, विच इज सेम एज, आप करके देखेंगे तो 625 स्क्वायर सेंटीमीटर. लाइट अजीब सा है, दिखता नहीं है इसमें. छोड़ो, रहने दो. All right, so this whole thing is 1/16 square centimeter, which means this area, this paper is exactly 625 square centimeter. So your homework is basically to convert this rectangle. 625 मतलब 25 times 25, right? तो अगर हम इसका एक बनाना चाहें तो स्क्वायर बन जाएगा ना, 25 times 25. तो आपका ये होमवर्क है, इस रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाना है ताकि कागज वेस्ट ना हो. यूज द होल पेपर, कन्वर्ट दिस इज एक्चुअली 297. मतलब यार, दिस इज, आई मीन, लेट मी टेल यू व्हाट NEP इज अबाउट. एवरीबडी हैज सीन दिस A4 पेपर. उसकी लंबाई 297 मिलीमीटर होती है. किसी ने पूछा, साले गधे 3 mm और बढ़ा देते तो 30 mm हो जाता, याद रहता ना अच्छी तरह, 30 सेंटीमीटर. Why did they're not stupid guys or whatever, they're not stupid, they did 3 millimeter less than 300. Why did they do that? There must be some. तो वो सोचना तो चाहिए यार. जो चल रहा है यार, बस प्रोसेस चल रहा है. We will have to think, we will have to get our children to think. जिंदगी में ये पेपर 10,000 पेपर हर आदमी हर दिन एक साल में यूज करता है. 297 mm by 210, which the area is exactly 625. आपका होमवर्क क्या है, इसको 25 by 25 में बना दीजिए. अगर आप यहाँ से 25 काटेंगे ना तो आप सोचेंगे ये यहाँ लगा दो, लगेगी नहीं, बराबर नहीं बैठेगा, गड्ढा बच जाएगा. How do you convert this rectangle without wasting any paper, using the whole paper, the whole area, into a square of 25 by 25? This is your whatever homework. I hope you do this homework and send us your homeworks or emails. We'll be very happy. We look forward to email ccl@iitgn.ac.in or manishjain@gmail.com or manish.jain@iitgn. आजकल तो इंटरनेट पे सबको सब कुछ पता है, कितने वाइफ कितने बच्चे, तो ईमेल तो बहुत आसान है. बट इन एनी केस, वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू. आई होप इट वॉज वर्थ योर टाइम. अगर नहीं तो अपनी ज़िंदगी के 45 मिनट रिवाइंड करके सोचिए कि किस लिए आए थे. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. Professor, thank you so much. This has been such an engaging session. I think all our attendees have had a lot of fun because we kept on getting answers. Like, it's amazing session, amazing energy. But what I really want to also understand from our attendees, how confident are you now feeling to implement NEP in your classrooms? So I'm going to just launch a very quick poll. It's on your screen right now. Please go ahead, take the poll, because it's very important for us to understand your NEP confidence level. And while that poll is happening, this is what I was going to say, that for whatever NEP is planning to do, all the things that we have developed, right? We have about 700 activities and models and games, which basically do talk about these 4 things. 1, context; 2, multidisciplinary; 3, hands-on; and 4th, giving you a sense of wonder. We have created this thing called the खोजी box. खोजी box है और इसके अंदर 100 खिलौने हैं. 100 खिलौने, the kind that I showed, and of course they sound very easy, right? आपको लगता है यार इसमें क्या बना लो, लेकिन
कष्ट होता है बनाने में, आपको चुंबक नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं. This is 12 years of our research, and this is what we call it the खोजी box, and I think this is a must for every teacher. हर साथ में एक डब्बा चले, मेरे तो चलता है. It is become a part of my, whenever I visit, I never check in this box, because डब्बा, शर्ट तो खरीद लेंगे वहाँ किसी ने बुलाया, लेकिन डब्बा कहाँ से खरीदेंगे? So this is something that I would highly recommend you go look at our website and see, and you'll get some sense of what is it that we're talking about. Go visit our website. Thank you so much. Right. Thank you so much, Professor. According to the poll, about 49% of our attendees are feeling extremely NEP confident, and I think a lot of the credit goes to you, sir. And I will say, एक चीज से काम नहीं होता. I mean, this is like saying कि यार हमने वर्कशॉप करा दी, अब हम it's like NEP हो गए, अब किसी की ना लीड की जरूरत है ना CCL, अब तो हो गए, हम तो रेडी हैं. No, I mean this is a work of constant engagement. सबसे जरूरी है हमारे टीचर्स की हैंड होल्डिंग. अगर प्रिंसिपल्स यहाँ पर हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेट नहीं पढ़ा सकता. इंटरनेट तो नहीं पढ़ा सकता किसी को. आई मीन आवर टीचर्स आर द वंस हु हैव टू बी फीलिंग इंटरेस्टेड, एक्साइटेड, एंगेज्ड अबाउट ऑल ऑफ दिस, राइट? आपने उनको सामान तो दे दिया, वही पुराना वाला कि वही पढ़ा दो, चैप्टर 6 एक्सरसाइज दिस और वो ax² + bx + c. करेगा क्या? हमको उनके टीचर्स के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा. द वर्कशॉप्स हैव टू हैपन फॉर ऑल ऑफ दिस. हाउ इज इट दैट वील डू lot of workshops, right, where we cannot do every single chapter ये कैसे करना है, no, but a general sense, a general direction, which is what we wanted to convey. But उसके लिए maybe a 3-day workshop or a 5-day, and if you're interested, send us an email. We would be very happy to conduct. आप लोग यहाँ पर कभी आना चाहते हैं तो आइए. We highly request both lead and the teachers who are there, just send us an email. Very happy whenever you want, you can come visit. We are situated in the western part of India, in IIT Gandhinagar, open 365 days a week. Thank you so much, Professor. And as I was saying, the attendees who are feeling moderately confident or still feel that they need more assistance, do visit our Lead School website, register yourself, and there will be people from Lead who will be in touch with you, and we'll do whatever it takes for to assist you and to make you NEP compliant. Having said that, right now I'm going to introduce Shalini Bhattacharya. She heads marketing and PR for Lead. And she is here to tell you what Lead is all about, who we are and what we do. Shalini, over to you. Thanks, Neha. Thank you so much, Professor Jain. बहुत interesting session था. Especially the one on the leaves on the wall. It took me 2 minutes to figure out what you were actually saying. But just very short introduction to Lead. We are, as Neha said, India's largest school at tech. We work with 9,000 plus schools across the country. We are now 11 years old. And we were established by Sumita and Smita Deora, our co-founders. And just like Professor Jain said, education needs to have a multidisciplinary approach in the classroom. Sorry to interrupt you. Your voice is echoing. It's not very clear to our audience. Not sure how to solve for that. I'll keep it short. Thank you everyone for attending. Thank you, Professor Jain, for taking such a wonderful, entertaining yet educational session. And over to you, Sneha. Thank you so much, Shalini. Thank you so much, Professor. Audience, there is a NEP readiness checker on the chat box right now. Please go ahead and take your test and see if your school is NEP compliant, NEP ready. Most importantly, and thank you to everyone for joining this wonderful session. We would also love to know your feedback of the session and what more do you want us to cover in our upcoming sessions. So I am just going to drop a message to everyone on the group. That's the feedback form. Please go ahead. We would love to hear your feedback on this webinar. And there is also a contact number and an ID. Please go ahead and call us up, write to us, and we will always be happy to assist more schools and make them more NEP compliant.
Thank you so much, everyone, for attending the session. I'm going to end the webinar. And thank you once again, Professor, for your time and wonderful energy on the session. Thank you.